Good evening, students. Today I am going to teach you Coulomb's law in electrostatics. It is just like law of gravitation in the chapter gravitation amjata 11th re padithile. Coulomb's law in electrostatics, it gives us the idea about the force between 2 point charges when they are kept at certain distance in certain medium. Suppose there are two charges, one charge is Q1, another charge is Q2, and the separation distance between them is R. Remember, here Q1 and Q2, they are called point charges. Point charges meaning the dimension of these two charges. The dimension of these two charges is very less in comparison to the distance between the two charges. In case we idura charge ko ame koi pariba point charges. Tale Coulomb's law kon kohuchi na Coulomb's law kohuchi the force, or that is electrostatic force between the two charges, is directly proportional to the product between the two charges and inversely proportional to the square of the distance between these two. So if we combine this, we can find Fe is equal to some constant beta Q1 Q2 by R square. This is again an inverse square law. The most important factor is here, which is your beta. What is this beta? Beta is defined as by a quantity that is called 1 by 4 pi epsilon. See, what is the important feature of beta here? Usually, I janiche gravitational force, the formula for gravitational force, I janithillu mane pakao, Fg is equal to G m1 m2 by r square. This law is also almost a similar kind of law, but here this G is called universal gravitational constant. But here beta is not a universal constant, it depends on the different medium in which the two charges are kept. Suppose dilodeka charge mu air re rakhili, tanko vitare jaha force rahila, same dita charge mu nei water vitare rakhili, but distance jaha tila air re se rakhili water vitare, force value change hejibo as this beta depends on the medium. Same time, a beta taku emti define karaichi 1 by 4 pi epsilon. This symbol is called epsilon, and this is called your permittivity. This epsilon is called permittivity of the medium in which the charges are kept. Tale amar force ta kon hejibo, F is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. So this is the most important law of electrostatics, that is your Coulomb's law. The basic law, it is electrostatic force between the two charges. This epsilon मन रखो, epsilon टा हला permittivity. अच्छा, ये permittivity रो meaning कौन? Permittivity हला like the simple logic. जदि दुटा चार्ज को मु air रे रखिली, air रे से दुटा चार्ज भितरे फोर्स टा सब बड़े मैक्सिमम हो. सेम दिरा चार्ज भितर मु वाटर को नै जिवि, सेम दिरा चार्ज सेम डिस्टेंस से दिने मु वाटर भितर रखिली, तांका भितर फोर्स टा एयर रे जहा थिला ताठारु कमी जाय. ता माने एयर रे सबुठु अधिक, ताठु अहुरि अधिक वैक्यूम रे, बुझियला. ता माने परमिटिविटी हला मीडियम रो गोटे एमिति गोटे प्रॉपर्टी जे हमकु कहि दबो दीटा चार्ज भितर फोर्स टा केते इफेक्टिव बा केते इफेक्टिव नुह. ता माने दीटा चार्ज भितर जो इंटरैक्शन होउची, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन केते इफेक्टिवली गोटे मीडियम दे की पास करिवो बा पास करिवो नाही, से आइडिया हमकु दे दबो
this epsilon or permittivity. मन रख फ्री स्पेस जदि दूर लेखा चार्ज फ्री स्पेस रे रहंती ताले ता पय गोटे स्पेशल सिंबल अछि दैट इज 1 by 4 pi आ एप्सिलॉन न लिखि कि एको लिखा जाय एप्सिलॉन 0 दैट इज q1 q2 by r स्क्वायर बुझियला ताले एटा को हम f e न लिखि बा सिंपली f नॉट बोली लिखि दबा f नॉट और एटा को तमे सिंपली f e माने इन जनरल इन एनी मीडियम एटा है particularly in free space मु लिखि दउ छी एठी फ्री स्पेस और वैक्यूम एटा है इन एनी मीडियम अब वर्तमान रे काम करिबा f नॉट डिवाइडेड बाय f e एटा को आसो डिवाइड कर दबा तले हम कोन पाइबा देखो 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square divided by 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square. So you are going to get epsilon by epsilon naught. This quantity is called epsilon r or this is called relative permittivity. So important point है here. The important point is f naught by f e is equal to epsilon r. It is otherwise called k. That is called dielectric constant. It is a pure number. This dielectric constant, it is a number only. Got? ताले ए नंबर को हमें आइडिया पाई जिबा सपोज दीटा चार्ज भितरे एयर रे तंक भितरे थिला फोर्स f नॉट सेम दीटा चार्ज सेम डिस्टेंस रे आ गोटे मीडियम रे रहले तंक भितरे फोर्स हे गला f e. So f नॉट by f e is equal to k or which implies f e is equal to f naught by k. Got? माने electrostatic force in any medium is 1 by k times the force between the same two charges separated at same distance in vacuum. Suppose example दोची suppose दीटा चार्ज भितरे एयर रे फोर्स हला 80 त माने f नॉट हे गला 80 न्यूटन पचारला f e केते if k is equal to 80 k 80 होची फॉर वाटर माने धीरे चार्ज जदि मु वाटर मीडियम रे रखिबी तांको भितर फोर्स केते जदि डिस्टेंस दि जन भितर सेम थिला एट जते बळे से माने एयर रे ताले f e केते हे गला f नॉट फॉर्मूला f नॉट बाय k 80 by 80 1 न्यूटन ताले आरो मीनिंग हला कोन बुझो दीटा चार्ज एयर रे थिले तांको भितर फोर्स दिला 80 न्यूटन सेम दीटा चार्ज सेम डिस्टेंस रे जोटा कि जमाने थिले कोड थिले ना एयर मीडियम में जदि सेम दीटा चार्ज को मु वाटर को नै जी तांको भितर फोर्स हे जो 1 न्यूटन मन फोर्स ता कमी गला ताले ए k by epsilon r तुमको कहि दबो फोर्स ता केते अमाउंट रो कमी जाई छी गोटे मीडियम रे अच्छा तमे ए फार्मूला रो तमे यूनिट ऑफ डायमेंशन बाहर कर परिबो बीटा रो यूनिट डायमेंशन एप्सिलॉन रो यूनिट डायमेंशन बाहर कर परिबो सो लेट अस फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन एंड बीटा तपे फार्मूला दरकार अच्छा ए फार्मूला रो देखो f is equal to beta into q1 q2 by r square ताले बीटा केते गला f into r square by
Q1 Q2 ताले देखो यूनिट ऑफ बीटा यूनिट डायरेक्ट पके देबे यूनिट फोर्स रहला न्यूटन मीटर स्क्वायर चार्ज रहला कूलम ये रहला आउटे चार्ज माने कूलम इनटू कूलम कूलम स्क्वायर so it is unit of beta. Similarly we can find the dimension of beta. Dimension of beta is newton माने रहला force रहला m1 l1 t minus 2 r square माने distance रो square which is l2 divided by q. Charge रो dimension q रो dimension होची a into t a1 t1 so which is square अछि q1 q2 a into t तामाने a square t square ताको सॉल्व कले dimension आसीबो so it is equal to m1 l3 t minus 4 a minus 2 এটা dimension of beta अच्छा beta है 1 by 4 pi epsilon तो मेरा dimension of epsilon is 1 by 4 pi dimension of beta 4 pi तो dimension नहीं तामाने उल्टा ही जीवो कोन तामाने बीटा रा डायमेंशन जहा तार रेसिप्रोकल हे गेला एप्सिलॉन रो बीटा रा यूनिट जहा तार रेसिप्रोकल हे जीवो यूनिट ता एप्सिलॉन रो तला हम लिखि दबा यूनिट डायरेक्ट लिखि दोची आरो उल्टा काहे ना एटी देखो बीटा इज 1 by 4 pi एप्सिलॉन टी को पड़े बीटा टी को पड़े आसीबो सो 4 pi रे तो यूनिट नाही कि डायमेंशन है सो यूनिट हम एटी लिखि दे परियो सो व्हिच इज कूलम स्क्वायर पर Newton into meter square. Dimension just उल्टा कर दिए 1 by तो m minus 1 l minus 3 t4 a2. Thank you.